Hello, welcome to lesson number 3 of the German language. In this lesson, we are going to discuss family members. So let's start. माए को मेरे को कहते हैं माइन। माइन अगर जो सब्जेक्ट है जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं वो मेल है तो माइन होगा, और अगर वो फीमेल है तो मायने होगा। मायने इज़ फॉर फीमेल, माइन इज़ फॉर मेल। माई हस्बैंड, माइन मन। माइन मन, हस्बैंड इज़ कॉल्ड मन। माइन मन, माई हस्बैंड, मेरा शोहर। माइन मन। माई ब्रदर, माइन बूडर। माइन बूडर, ब्रदर को बूडर कहते हैं। माइन बूडर। माई ब्रदर एंड माई हस्बैंड, माइन बूडर und mein Mann। माइन बूडर und mein Mann। फादर इज कॉल्ड फाटर। फाटर, जर्मन में वी को एफ की तरह प्रोनाउंस किया जाता है। फाटर, माइन फाटर, माई फादर, माइन फाटर। माई सिस्टर, मेरी बहन। माइने श्वेस्टर, माइने श्वेस्टर, बिकॉज सिस्टर इज़ फेमिनिन, फीमेल, तो माइने हो जाएगा। माइने श्वेस्टर। लाइक आई टोल्ड यू बिफोर दैट इन जर्मन ऑल नाउन्स आर कैपिटलाइज्ड। तो इसी तरह से आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जितने भी नाउन्स हैं वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट हो रहे हैं। माई ब्रदर, माई सिस्टर। माइन बूडर, meine Schwester। Mein Bruder, meine Schwester। My brother, my sister। Mein Bruder, meine Schwester। My brother and my sister। Mein Bruder und meine Schwester। Mein Bruder und meine Schwester, and is und। Mein Bruder und meine Schwester। My father, mein Vater, my mother, meine Mutter। Mein Vater, meine Mutter। Son is called Sohn। Sohn. It is written like this with an S-O-H-N, but it's pronounced as Sohn, beta, Sohn। My son, mein Sohn, mein Sohn। Daughter is known as Tochter। Tochter, my daughter, meine Tochter, meine Tochter। My daughter, my son, meine Tochter, mein Sohn, meine Tochter, mein Sohn। आर ए को जहाँ पे आर ए हो उसकी जो प्रोनाउंसिएशन होती है दैट इज़ गा। गा। सो वाइफ इज़ कॉल्ड फ्राउ। फ्राउ, it's written like this F-R-A-U, but R-A, like I told you, it's pronounced as G. So wife is Frau. Frau. You are my wife. You is du. R is bist. You are my wife. Du bist meine Frau. Du bist meine Frau. Du, you, bist, are meine, my Frau, wife. Du bist meine Frau. Yes, you are my brother. Yes is ja. Ja, du bist mein Bruder. Ja, du bist mein Bruder. Yes, you are my brother. Ja, du bist mein Bruder. My wife, my son. Meine Frau, mein Sohn. Meine Frau, mein Sohn. So that was it from the German lesson number 3. I will see you again soon with the next lesson. Thank you.